Hello everyone. How are you all? And how your preparations are going on? I hope you all are doing great. In this video, I have covered up the major bills and acts for the year 2025. The complete detailed explanation of every acts, quick revision with top 20 MCQ. So let's go ahead without wasting time. So the first question is related with the act Sabka Bima Sabki Raksha Act 2025. What is the revised foreign direct investment FDI limit in India's insurance sector under this act? इस अधिनियम के तहत भारत के बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की संशोधित सीमा क्या है? So the option B is correct, 100%. Second question is, which regulatory body is empowered with stricter penalties under this act? इस अधिनियम के तहत किस नियामक निकाय को अधिक कठोर दंड देने का अधिकार प्राप्त है? So the option C, IRDAI. Let's talk more about this in detail about Insurance Amendment Act 2025. Sabka Bima, Sabki Raksha Act introduces major reforms in India's insurance sector. भारत के बीमा क्षेत्र में बड़े सुधारों की शुरुआत करता है. Increases FDI limit from 74% to 100%, permitting full foreign ownership. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है, जिससे उन विदेशी स्वामित्व को अनुमति मिल गई है. Strengthens consumer rights, data accuracy, privacy protection, and transparency in claim rejection. यह उपभोक्ता अधिकारों, डेटा की सटीकता, गोपनीयता संरक्षण और दावा अस्वीकृति में पारदर्शिता को मजबूत करता है. Encourages digital insurance policies and reduces entry barrier for insurers. यह डिजिटल बीमा पॉलिसियों को प्रोत्साहित करता है और बीमा कंपनियों के लिए प्रवेश बाधाओं को कम करता है. Empowers IRDAI with stricter regulatory and penalty provisions. यह IRDAI को सख्त नियामक और दंडात्मक प्रावधानों के साथ सशक्त बनाता है. Aligns with the vision of insurance for all by 2047. यह 2047 तक सभी के लिए बीमा के दृष्टिकोण के अनुरूप है. So this was about Insurance Act. Next is Finance Act 2025. Finance Act 2025. So this is the question, the first question. A key reform introduced by the Finance Act 2025 is the abolition of waste tax. वित्त अधिनियम 2025 द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख सुधार किस कर का उन्मूलन है? So the option B is correct. Equalization levy on online advertisements. ऑनलाइन विज्ञापनों पर समतुल्यता शुल्क. Next question is, according to the Finance Act 2025, the fiscal deficit for 25-26 is targeted at. वित्त अधिनियम 2025 के अनुसार वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किस स्तर पर लक्षित है? So the option C is correct, 4.4% of GDP. Let's discuss in detail. So Finance Act 2025 gives statutory approval to the Union Budget
2025 to 26 after Parliament's passage. संसद द्वारा पारित होने के बाद यह विधेयक केंद्रीय बजट 25-26 को वैधानिक मंजूरी प्रदान करता है. Abolishes 6% digital tax on online advertisements to improve ease of doing business. व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए ऑनलाइन विज्ञापनों पर लगने वाले 6% डिजिटल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है. Sets total expenditure at 50.65 lakh crore. कुल व्यय 50.65 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है. Targets a reduced fiscal deficit of 4.4% of GDP. इसका लक्ष्य राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.4% तक कम करना है. Increases allocation for capital expenditure, defense and employment generation. पूंजीगत व्यय, रक्षा और रोजगार सृजन के लिए आवंटन में वृद्धि की गई है. Next we have the Income Tax Act 2025 and this question is related with it. The first question is the primary objective of replacing the Income Tax Act 1961 is to. So, आयकर अधिनियम 1961 को प्रतिस्थापित करने का प्राथमिक उद्देश्य यह है ऑप्शन बी सिंप्लीफाई एंड मॉडर्नाइज डायरेक्ट टैक्सेशन. प्रत्यक्ष कराधान को सरल और आधुनिक बनाए. Which of the following is an expected outcome of the new direct tax law? निम्नलिखित में से कौन सा नए प्रत्यक्ष कर कानून का अपेक्षित परिणाम है? So the option C is correct, that is improve transparency and investor confidence. पारदर्शिता में सुधार और निवेशकों का विश्वास. Now, a detailed explanation. Income Tax Act 2025. It replaces the 6-decade-old Income Tax Act 1961. यह 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेता है. Aims to simplify and modernize India's direct tax system. इसका उद्देश्य भारत की प्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल और आधुनिक बनाना है. Uses clear language and removes obsolete provisions. स्पष्ट भाषा का प्रयोग करता है और अप्रचलित प्रावधानों को हटाता है. Reduces litigation and compliance burden without raising tax rates. कर दरों में वृद्धि किए बिना मुकदमेबाजी और अनुपालन का बोझ कम करता है. Enhances tax certainty, transparency and investor confidence. कर संबंधी निश्चितता, पारदर्शिता और निवेशकों को विश्वास को बढ़ाता है. So now let's move to the next act and this is Viksit Bharat GRAMG Act 2025. How many days of wage employment are granted under the new act? नए अधिनियम के तहत कितने दिनों के वेतनभोगी रोजगार की गारंटी दी गई है? So option C, this is 125 days. यह नया अधिनियम किस कार्यक्रम का स्थान लेता है? Which program does the new act replace? So option C, what is that? Manrega. VBGRAMG Act 2025. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission. The act replaces Manrega with a restructured rural employment framework. यह अधिनियम मनरेगा को पुनर्गठित ग्रामीण रोजगार ढांचे से प्रतिस्थापित करता है. It guarantees 125 days of wage employment for rural household up from 100 days earlier. यह प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के वेतनभोगी रोजगार की गारंटी देता है जो पहले 100 दिन था.
focuses on sustainable livelihood, asset creation, and convergence with development programs. ये सतत आजीविका, संपत्ति सृजन और विकास कार्यक्रमों के साथ समन्वय पर केंद्रित है. The government terms is a modern reform aligned with Viksit Bharat 2047. सरकार इसे विकसित भारत 2047 के अनुरूप एक आधुनिक सुधार बता रही है. Critics fear a dilution of rights-based employment guarantees. आलोचकों को आशंका है कि इससे अधिकारों पर आधारित रोजगार गारंटी कमजोर हो जाएगी. What is the key objectives of Promotion and Regulation of Online Gaming Act 2025? ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने और विनियमित करने संबंधी अधिनियम 2025 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन सी, ऑनलाइन गेमिंग विनियम के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करें. दैट इज क्रिएट अ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन. So the next question is, which type of gaming platform is completely banned under this act? इस अधिनियम के तहत किस प्रकार के गेमिंग प्लेटफॉर्म पर पूर्णतः प्रतिबंध है? So the option D is correct. Online money gaming platforms. Now discuss it in detail. Promotion and Regulation of Online Gaming Act 2025 establishes India's first national framework for regulating online gaming. भारत में ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए पहला राष्ट्रीय ढांचा स्थापित करता है. Promotes e-sports and online social gaming activities. E-sports और ऑनलाइन सोशल गेमिंग गतिविधियों को बढ़ावा देता है. Imposes a complete ban on online money gaming platforms. ऑनलाइन पैसे कमाने वाले गेमिंग प्लेटफॉर्मों पर पुनः प्रतिबंध लगाता है. Set up a central online gaming authority for regulation and sector development. विनियमन और क्षेत्र के विकास के लिए एक केंद्रीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की स्थापना की गई है. Reduces strict penalties to curb addiction, financial loss, fraud and misuse. वैश्विक वित्तीय हानि, धोखाधड़ी और दुरुपयोग को रोकने के लिए कठोर दंड का प्रावधान भी किया गया है. Okay, now the next is Center introduces Health Security say National Security Cess Bill 2025. Let's talk about this. Which tax is being phased out by 2026? कौन सा कर 2026 तक धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है? So the option B, GST compensation cess, that is GST मुआवजा उपकर. Next question is, revenue from new excise duty will mainly be used for. नए उत्पाद शुल्क से प्राप्त राजस्व का मुख्य रूप से उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा. किस लिए? पब्लिक हेल्थ, नेशनल सिक्योरिटी. ऑप्शन सी, सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा. GST compensation. Let's talk about this in detail. GST compensation cess on tobacco and pan masala will be phased out by 2026. तंबाकू और पान मसाला पर लगने वाला जीएसटी मुआवजा उपकर 2026 तक चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा. A new excise duty and dedicated cess will replace it to keep taxes on same goods high. हानिकारक वस्तु पर करों को उच्च बनाए रखने के लिए एक नया उत्पाद शुल्क और समर्पित उपकर इसकी जगह लेगा. Okay, the next we have the Electricity Amendment Bill 2025. The question is, what is a key reform introduced by Electricity Amendment Act 2025? विद्युत संशोधन अधिनियम 2025 द्वारा शुरू किया गया प्रमुख सुधार क्या है? So ऑप्शन बी, एक ही क्षेत्र में एकाधिक वितरण लाइसेंस धारी. Okay, the option B, multiple distribution licenses in the same area.
Next question is, which group continues to receive protected subsidized tariffs under this act? इस अधिनियम के तहत किस समूह को संरक्षित रियायती टैरिफ प्राप्त करना जारी है? हाँ, तो what is the answer? तो ऑप्शन सी, that is farmers and low income household, किसान और निम्न आय वाले परिवार. Let's more discuss about this. Electricity Amendment Act 2025 modernizes India's power sector by promoting competition in electricity distribution. विद्युत वितरण में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर भारत के विद्युत क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना. Allows multiple distribution licenses to operate in the same area. ये एक ही क्षेत्र में कई वितरण लाइसेंस धारियों को संचालन करने की अनुमति देता है. Introduces cost-reflective tariffs and reduces cross-subsidy burden on industries. ये लागत के अनुरूप टैरिफ लागू करता है और उद्योगी पर क्रॉस सब्सिडी के बोझ को कम करता है. Protects subsidized electricity for farmers and low-income households. किसानों और कम आय वाले परिवारों के लिए सब्सिडी वाली बिजली की सुरक्षा करता है. Strengthens regulatory commissions and supports clean energy integration. यह नियामक आयोगों को मजबूत करता है और स्वच्छ ऊर्जा के एकीकरण का समर्थन करता है. So now we'll move to the next bill, National Sports Governance Bill 2025. One major objective of National Sports Governance Act is to राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि क्या है? So the option C, ensure transparent governance and athlete welfare. That is, पारदर्शी प्रशासन और खिलाड़ियों के कल्याण को सुनिश्चित करना. Which organization is brought under the RTI Act by the Sports Reform? इस खेल सुधार के तहत कौन सा संगठन सूचना अधिकार अधिनियम के दायरे में आता है? So the option B, BCCI. Let's talk about this. National Sports Governance Act 2025 brings the BCCI under the RTI Act and recognizes it as a national sports federation. यह विधेयक बीसीसीआई के आरटीआई अधिनियम के दायरे में लाता है और इसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देता है. Establishes a national sports board and a sports tribunal for governance and dispute resolution. इसके अंतर्गत राष्ट्रीय खेल बोर्ड और शासन एवं विवाद समाधान के लिए खेल न्यायाधिकरण की स्थापना की जाती है. Mandates athlete representation and minimum women representation in sports. इसमें खिलाड़ियों के प्रतिनिधित्व और खेल निकायों में महिलाओं के न्यूनतम प्रतिनिधित्व को अनिवार्य किया गया है. Introduces term limits and transparent fair election in sports administration. खेल प्रशासन में कार्यकाल सीमा और पारदर्शी निष्पक्ष चुनाव की शुरुआत करता है. Aligns Indian sports governance with international standards, boosting athlete welfare and Olympic ambitions. ये भारतीय खेल प्रशासन को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाता है, जिससे खिलाड़ियों के कल्याण और ओलंपिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा मिलता है. And the next one is, this is Waqf Amendment Act 2025. The question is, which act was repeated under the Waqf Amendment Act 2025? वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के अंतर्गत कौन सा अधिनियम निरस्त किया गया? So the option B, that is मुसलमान वक्फ Act 1923. मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923. One key features of the Waqf Amendment Act 2025 is, so
adoption वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो ऑप्शन सी, inclusions of women and non-Muslims in Waqf board. Inclusions of women and non-Muslims in Waqf board, that is महिलाओं और गैर मुसलमानों को शामिल करना, वक्फ बोर्डों में महिलाओं और गैर मुसलमानों को शामिल करना. So let's discuss more about this amendment. Waqf Amendment Act 2025 reforms the administration and management of Waqf properties in India. भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना. Repeals the colonial era Mussalman Waqf Act 1923. औपनिवेशिक काल के मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करता है. Amends the Waqf Act 1995 to improve transparency, audits, digitization and governance. पारदर्शिता, लेखा परीक्षा, डिजिटीकरण और शासन में सुधार के लिए वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन किया गया है. Allows inclusion of women and non-Muslims in वक्फ बोर्ड. वक्फ बोर्डों में महिलाओं और गैर मुसलमानों को शामिल करने की अनुमति देता है. Provides for appeals to the High Court. High Court में अपील करने का प्रावधान करता है. Strengthens protection of women's inheritance rights. महिलाओं के विरासत अधिकारों की सुरक्षा को मजबूत करता है. Strengthens aims to improve efficiency, though it has generated public and political debate. इसका उद्देश्य कार्य क्षमता में सुधार करना है, हालांकि इसने सार्वजनिक और राजनीतिक बहस को जन्म दिया है. Okay, so that's all for today, everyone. Thanks for watching. Requesting everyone to please subscribe my channel so that you will get the notification for my next video. Click on the like buttons and please write down your feedback in the comment box. This video, it will be very much helpful for those aspirants who are preparing for any competitive examination. And also mostly those who are preparing for mains, so that you will get the content for your mains paper. So please watch it, share to your friends as much you can do, and support me. Thank you all. Bye.